तो प्रार्थना हो गई? तो कब होगी? फुटबॉल खेलने से मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक फुटबॉलर बन सकते हैं। जो एक अकेले आदमी खेलना और एक टीम के साथ खेलना बहुत अलग होता है। टीम में किस तरीके से तालमेल बैठाया जाता है दूसरों के साथ। फुटबॉल खेलते हैं तो एक दूसरे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर एक दूसरे का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पास नहीं दे पाएंगे। When I saw that the kids, when they have the football, they just like playing. They forget that they had a fight. They forget about their past. They only think what they're doing at that moment, and that's what they, there is a smile on their face. यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिला है और यहाँ पे मेरे साथी जो भी पहले कहीं ना कहीं काम करते थे अलग अलग जगह पे, खदानों में, ईंट भट्टों पे, तो इनकी भी ज़िंदगी में नई शुरुआत है, इसलिए बाल आश्रम के लिए बहुत अच्छी जगह है। And we had opportunities to get into the system, so we took some academies. We started running academies in Gurgaon and Delhi and Dwarka, and that's how we started with the football academy. Then of course it took us a lot of time, the whole scenario of sports, the whole circle of sports that's there, which we thought is not the way that we wanted it to be. So we basically kind of went against the system of how the people were being trained, and applied our own system to it. Now finally we have India ranked players with us, one of the best players who's there, को पता चला है बहुत सारे आसपास के लोगों में एक मैसेज स्प्रेड हुआ है कि बाल आश्रम में एक सुदेवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल में बच्चों को ट्रेन कर रही है ग्रास रूट लेवल पे जाके। बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं गाँव में, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वो अब रुचि दिखा रहे हैं, धीरे धीरे वो हमारी तरफ आ रहे हैं। The whole belief that something good is always going to happen and everything is going to be fine, everything is going to be great, that's something that obviously comes back from these kids. And I see them, I see it in their eyes, be it football, be it the way they are, what they believe in over here. They actually believe in miracles, and that's the way it's going on.